Okay, today's we are going to cover the left topics: blood relations, Venn diagram, arrangement questions, ratio, proportion, percentage, some problem related to age and time, and boats and streams. Okay, so we are beginning with our new topic called blood relation. So first of all, we need to understand what are the concepts behind it. So in blood relations kind of questions, you need to consider or you need to take care of few points while approaching such questions. All right. So the first thing is that you need to draw the relations. Okay, you need to draw the relations as per the generation, according to the generations. Okay, suppose I take my generation as this reference point. Okay, this is reference point. Okay, now my father, my mother, my uncle, they will be one generation up. uh, Below me, like my children or niece, right, they are the next generation to us. So we need to take care of this while we draw such diagrams related to such questions. We need to take care of the generation. Okay, another thing we need to take care of the while representing the male and female member of this blood relations, we have to mention this sign, plus or minus. For example, you can put, if there is any male member, you just put plus. If for any female member, you put minus. Okay, so that is just a sign convention. And the third thing that need to be take care of the arrows. Okay, right, what is arrow? For example, I write A is sister of B. Okay, so you will be representing this as A and B. Okay, so to which side the head of the arrow should be? Okay, it is this statement is saying the sister A is the sister of B, so towards A would be the arrow. So actually A, we are talking about the A is actually sister. Okay, so you need to take care of this arrow. Had it been other way around, like had this been, अगर ये ऐसा होता, तो it says कि B is the sister of A, which is not true as per the statement. So you need to take care of this arrow also. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, now again, not a Sir, thumb please rule. one more time. So please one more time. Okay, कहाँ से कौन सा पॉइंट आपको? हेलो, यस सर, जो अभी रिसेंटली आपने बताया ना, अच्छा, वो जब arrow आप एरो क्या कर रहे हैं, जब लेट्स से स्टेटमेंट में लिखा है ए इज फादर ऑफ बी. ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, ए इज द फादर ऑफ बी. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज अ जनरेशन गैप, क्योंकि यहाँ पर फादर इन्वॉल्व हैं. तो ए इज द फादर. ओके, सो ए वुड बी द टॉप जनरेशन and B would be the son or daughter. Okay, so B is the, so, and we need to take care of the arrowhead. So this statement talking about the relation. Which relation? Father. So who is father? A is the father. Okay, तो जो एरो का हेड होना चाहिए, it should be towards A, not towards B. Okay, is it clear? Yes, sir. आपने Yes, sir. Yes, sir. आपने क्या किया, आपने जनरेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ किया. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आपने एरो, ये जो साइन कन्वेंशन था प्लस और माइनस, दे यू हैव डेजिग्नेटेड एज पर द मेल और फीमेल मेंबर इन द रिलेशन, बिकॉज ए इज द फादर, सो
by conventions we are putting plus. Okay, and B could be daughter or son, so I'm not putting any sign, right? And arrow towards, because this statement is representing the relation of father. Okay, so the Hmm. arrowhead should be towards the relation. And who is father? A is the father, so arrowhead should be Hmm. towards A. क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, और उसके बाद है Plus is for male and minus is for female. वो आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं. सो आई एम जस्ट फ्रॉम माय साइड आई एम पुटिंग प्लस फॉर मेल मेंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, Okay. Hmm. ठीक है. Then again, not a thumb rule, but you can use this trick. Whenever you are addressing such questions, you try to identify the individual between the conversation is going on, or between whom the we need to establish the relation. Okay. And second thing, whenever there is a big statement, so better to try to solve it from the last to first. Okay, if there is a big statement, so we'll just start from the last and then we'll come to the beginning of the statement. Okay. Yes, sir. So in blood relations, we see these kind of questions in conversations, puzzle, and coded. So we'll see one by one. Okay, so the first example, it says, pointing to a lady, Ravi said, okay, she is the only daughter of the father of my sister's brother. So how is she related to Ravi? ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार कि पॉइंटिंग टू अ लेडी. सो एक्चुअली जिसके बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है वो लेडी के बीच में है और रवि के बीच में है. ओके, सो इट सेज हाउ शी इज रिलेटेड टू रवि. तो आपको क्या बताना है? हाउ शी. तो हमको जो एक्चुअली बताना है हाउ शी, ये वाला रिलेशन बताना है. हमको ये वाला नहीं बताना, ये वाला नहीं बताना, हमको ये वाला बताना है कि हाउ लेडी इज रिलेटेड टू रवि. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now it says she is the only daughter. She, who? This lady is the only daughter of the father of my sister's brother. Okay, so my sister's brother. So यहाँ पर ये जो आप just look at this part of this statement, my sister's brother. So we'll try to solve this from here. So we'll draw this diagram, flow chart. My sister's brother. So this is Ravi. ठीक है, my sisters. So I'm just putting plus. My sisters. For sister, I'm putting S. Okay, only daughter of the father of my sister's brother. Okay, so there are two cases. Either okay, so sister brother mean Ravi ke father, Ravi ka brother itself. Okay, sister's brother. Any confusion? Any confusion to this? सर आपने एरो लेडी के तरफ लिया. Ravi saying na my sister's brother. My sister, कौन सा रिलेशन है यहाँ पे? सिस्टर. तो सिस्टर की तरफ एरो किया. एंड नाउ द सिस्टर्स ब्रदर, तो अगेन ब्रदर की तरफ एरो किया. And because they all belong to the same generation, that's why I've put them in the same horizon. Is it clear? Okay. Yes, Now sir. अभी एक स्टेप पीछे जाएंगे आप. ये हो गया रिलेशन. अभी आ गया फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर. फादर. ओके, तो अभी ये फादर कौन है? इनका फादर तो एक ही होगा. Okay, so I'm just putting F one generation up. Okay, so I'm putting arrow this way. Brother's father of sister's brother. Is it clear?
हेलो, Yes, sir. है ना? अभी क्या पूछा है? द ओनली डॉटर ऑफ फादर, ओनली डॉटर ऑफ फादर, तो कौन होगा ओनली डॉटर ऑफ फादर? ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो अभी आप बताओ, हाउ शी इज रिलेटेड टू रवि? Sister Sister? only. सिस्टर, ओके, सिस्टर. Yes, sir. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. ठीक है, okay. Now we'll solve the second question. Pointing to a photograph of a boy, Suresh said he is the son of the only son of, he is the son of the only son of my mother. How Suresh related to that boy? Okay. So हमको किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है? सर सुरेश और बॉय के बीच में. हाँ, जो फोटोग्राफ है, बॉय का फोटोग्राफ है एंड सुरेश के बीच में. ठीक है, तो व्हाट ही सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली. अगर इफ यू कैन मेक आउट एट वंस इटसेल्फ, तो यू नॉट नीड टू मेक द फ्लो चार्ट. अदरवाइज अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ड्रॉ द फ्लो चार्ट. ओके, अदरवाइज क्या होता है, जस्ट आई एम गोइंग विद द स्टेटमेंट एंड आई एम एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट एंड आई कैन आंसर इट. बट अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो यू बेटर ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज द सन, he is the son of the only son of my mother. Okay, only son of my mother. अभी यहाँ पे आप एक देखेंगे, only son of my mother. So Sir, brother is the answer. नहीं, कैसे only son of my mother क्या हो Father. सकता है? Father. Sir, father is the answer. Yes, father is the answer, but Okay. have you comprehended this question? Only son of He my is mother the- mean myself, Yes, yes, sir. Okay. है ना? Only, हम्म है Yes, ना? तो ये आ हाँ जाएगा, हाँ this is me, me means Suresh. हम्म And is the son, he is the son, Son. is the son. Okay, now how me means Suresh is related to son? Obviously father. No, कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? No, वो sir. फोटोग्राफ किसका है? वो फोटोग्राफ किसका है? वो कहते हैं कि जो मेरी मदर का जो ओनली सन है, इकलौता जो बेटा है, वो उसका बेटा है. मतलब तो इकलौता बेटा मेरी मदर बोले तो मेरी मदर का, ओनली मतलब वन मैं, सन. हाँ मेरी ना, हाँ राइट. हाँ मतलब मी माई सेल्फ. नो, हाँ and is the son, और जिसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो so the boy in the picture is actually my son. Okay, now it is saying how Suresh is related. Again it has been asked, Suresh, how Suresh is related to that boy. So ये कौन सा रिलेशन है? फादर? yes or no? यस सर. Yes, sir. है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ओनली सन ऑफ माई मदर, इट मीन माई सेल्फ. ठीक है, ओके. नाउ would you like to solve this? Just Yes, take sir. one, just take 1 minute and solve this. Oh father. Oh grandfather.
Done. सो एक्चुअली इसमें करण और रिद्धिमा के बीच में रिलेशन निकालना है. तो क्वेश्चन इज सेइंग हाउ रिद्धिमा इज रिलेटेड टू करण. तो एक्चुअली हमको हाउ रिद्धिमा, वी नीड टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन. Which relation is this? Which relation is this? So we need to find which relation is this. Okay, now we'll solve this from the back side. Okay, from end to the beginning. It says my brother's daughter, my brother. So this is Karan actually. My brother's daughter, my brother's. So he's brother and brother daughter. Okay, now it says grandfather of my brother's daughter. So for grandfather we need to go one generation up of Karan. So this is grandfather of this daughter. Okay, so this is grandfather. Now father of grandfather, no, again we need to go up one generation. Okay, so again I'm just writing F. Okay, so it's father. Okay, so this is what I could get from the statement. Again it's saying daughter-in-law of the father. Now we need to make the daughter-in-law of this F, है ना. तो daughter-in-law in the sense only daughter-in-law, only daughter in the law, in-law में मतलब कि ये जो डॉटर थे उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो फादर का ओनली डॉटर इन लॉ इन द सेंस ऑब्वियसली ये इनके सन है. तो इनके जो काउंटर पार्ट होंगे, इनकी जो वाइफ होंगी, इज द ओनली डॉटर इन लॉ. Okay, so Yes, I'm sir. just DIL. I'm just putting DIL. Okay. Now you are actually किसके बीच में अब we need to find relation. So actually she is Riddhima. Okay, this girl is Riddhima. So we need to find the relation between Karan and Riddhima. So can you find out the relation? Mother. Exactly, mother. ठीक है? Any confusion? किसी को if anybody is having difficulty in to comprehend this flow chart, I'll make sure कि आपको समझ आए. So any confusion so far? सर वो सेंटेंस को ही फ्रेम करना फ्लो चार्ट में वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नहीं, that's why I said ना कि आप एक बार उसको पीछे से सॉल्व करिए. ओके, जैसे यहाँ पे आप just go by one by one. ओके, जस्ट गो बाय वन. ब्रदर्स डॉटर, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर्स डॉटर. सो एक्चुअली ये करण है जो कह रहा है माई ब्रदर्स डॉटर, माई ब्रदर डॉटर. ओके, वो एक तरीके से नीज हुआ, करण की नीज हुई. ओके, फिर वो ग्रैंडफादर ऑफ, अच्छा अभी करण की नीज के ग्रैंडफादर, एक्चुअली टेक्निकली वो करण के फादर हुए. ओके, नाउ इट्स सेइंग द फादर ऑफ ग्रैंडफादर, तो एक्चुअली वो करण के ग्रैंडफादर हुए करण के. एंड अब ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ मेरे ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ वुड बी माय मदर, नो, है ना. तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now it's saying the another topic, not topic but type of questions in the blood relation.
It says A is the son of B, but B is not father of A. C is the daughter of D. B and D are a married couple. How A is related to C? Okay. So it says A is the son of B. So I'm just trying to go one by one. I mean, by the statement. A is the son of B. So A is the son of. So I'll just put यहाँ पे I'll just write son. A is the son. Okay. यहाँ पे confirm है, gender confirm है. So because A is male, so I'm putting A, B. Okay. अब यहाँ पे should I put plus or minus? प्लस बिकॉज मेल है. कैसे मेल है? यहाँ लिखा है ना B सर is not माइनस father आएगा. of A. माइनस आएगा. अच्छा, नॉट फादर. ओके. हाँ, तो फादर नहीं है तो ऑब्वियसली मदर होगा. हाँ. Okay. Now the other statement saying C is the daughter of D. Okay, so I'm just separately I'm putting C. I don't know the relation between this AB and CD. Okay, so make अलग से side में another relation establish कर रहा हूँ. C is the daughter of D. C is the daughter of D. Again, I know the gender of C, daughter, and B and D are a married couple. So actually B and D are a married couple. Okay, is it clear? Yes, sir. अभी मैरिड कपल होंगे जब ये, अगर ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? Plus ठीक है, प्लस आएगा. अभी आपको किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, फाइंड करना है? A and C. हाउ ए इज रिलेटेड. सो इज इट To आस्किंग दिस वे और दिस वे? आपको किस, ये आपको Sir, आपको कौन सा रिलेशन निकालना है? आई एम जस्ट पुटिंग ऑप्शन ए और दिस वे ऑप्शन बी. कौन सा निकालना है आपको? option A. Sir, Option A. A. Yes, exactly. Yes, sir. आपको Yes, how sir. A is related and that would be Answer is the A, brother. exactly correct. ठीक है. So B would be the A would be the answer, brother. Is it clear? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Okay. If A is the brother of B, just take 30 seconds and solve it. Sir, C. Answer. Okay. Done? Nephew. Okay. How many of you getting this C? Okay, we'll solve it. It says A is the brother of B. So A is brother of B. ठीक है. Can I put plus here? Yes, sir. यहाँ पे मैं माइनस लिखूं या प्लस? Minus because B is the sister of C. B, exactly. So B is the sister of C. अभी यहाँ पे C में मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? Plus. And C is the father and C is the father of D. Okay, so I'm just putting यहाँ पे C Plus. और यहाँ पर D. अभी आप बताओ एरो ऊपर को आएगा या नीचे को? कौन सा रिलेशन है यहाँ पे? Sir, ऊपर आएगा. C is the father of हाँ, D. exactly. तो यहाँ पर C is the father of D. Now how D is related to A? How D is related? क्या रिलेशन है ये?
nephew. कैसे नेफ्यू कैसे हो सकता है? नीस भी तो हो सकता है. Yes, sir. Cannot be determined. एग्जैक्टली तो आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, Okay. क्योंकि जिनको नेफ्यू आंसर मिला है ना, तो आप यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है. Okay. ओके, Yes, sir. अगर अगर यहाँ पे कोई और रिलेशन होता, लेट्स से आंट और कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रिलेशन होता, तब आप यू कुड हैव गो विद नेफ्यू. बट यहाँ पर अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन आया है, तो यू बेटर गो विद दैट. Okay, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. why I'm saying cannot be determined, because यहाँ पर D का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है. It last statement is saying C is the father of D. C is the father of D. D के ये फादर हैं, बट ये नहीं पता कि D उनकी डॉटर है या सन है. ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके. Last question of this topic. It says E is the wife of A. Okay, E is the. अच्छा, आप ट्राई करना चाहेंगे इसको? Yes, sir. आप ट्राई करिए इसको. And just take 1 minute, not more than that. सर फर्स्ट वाले का आंसर The first वाला ग्रैंड डॉटर इन लॉ is related to डॉटर G. इन लॉ. हाँ, Okay. डॉटर इन लॉ है सर. और पहला जी इज आपका, हाँ, और सेकंड का Second, सर वो mother. कांट बी डिटरमाइंड लग रहा है मुझे, ओके. अभी किसी और का बिकॉज वो वाइफ हो जाती Oh, है ना G is सर. related जी to F. एंड एफ हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं. ओके, अभी विल जस्ट सॉल्व इट. अभी किसी और का कोई और आंसर आया? According to me, first में ग्रैंड डॉटर इन लॉ and अच्छा, second में G is related to F. Mother. Second में mother. ओके ओके. Second में इसके अलावा mother किसी होता है. और का कोई डिफर कर रहा है आंसर? विल जस्ट एक्सप्लेन इट. ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? E इज द वाइफ ऑफ A. ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग. E इज वाइफ ऑफ A. ठीक है. C इज ब्रदर ऑफ E. C, अभी जनरेशन सेम होगी या डिफर करेगी? Same. सेम होगी ना, तो C इज ब्रदर ऑफ E. Okay, now B is mother of A. Now F is the father-in-law of E. F कहाँ है? F is the father-in-law of, तो जनरेशन हो जाएगी अब. Okay, father-in-law F is the father. I'm just writing FIL, father-in-law of E. ठीक है. Now G is the mother-in-law of B.
G is mother-in-law of B. So I'll just go up. ठीक है. So actually G is mother-in-law of B. Oh sorry, I have. This is G. Okay, this is G. Okay, ऐसा ही कुछ डायग्राम, ऐसा ही कुछ बना है आपका. Yes, sir. ठीक है. So G is the mother-in-law of B. Okay, now how E is related to G. अभी कहाँ कौन सा रिलेशन निकालना है? How E is related to G. अभी आपको जो पहला बताना है वो ये बताना है. ठीक है. अभी आप ये कैसे रिलेशन कैसे निकालोगे? यहां पर ये क्या हो रहा है, आप ये देखो, ये कोई मदर इन लॉ है. ओके, और ये उनकी डॉटर इन लॉ है. ओके, डॉटर इन लॉ मतलब अगर ये आई एम जस्ट जैसे ऐसे कॉम्प्रिहेंड करिए आप इसको. ये दादी हैं, या आपकी या कोई मेरी दादी हैं, ये उनकी डॉटर इन लॉ दैट इज माय मदर हैं, और ये मदर मतलब टू से this is me, okay, and my wife. Okay, now what is the relation कि जो मेरी दादी हैं उनका और मेरी वाइफ का रिलेशन. So that would be granddaughter-in-law. Is it clear? Yes, sir. कोई ओके सर. कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. No, sir. ठीक है, ये एक्चुअली इनका सन नहीं है, ये डॉटर है. ठीक है, ये डॉटर है इनकी. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ. हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ. जी और एफ में रिलेशन आपको बताना है. हाउ, ये रिलेशन आपको बताना है. ये क्या होगा? मदर हो जाएगा मैम. एग्जैक्टली मदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ और बी का रिलेशन है. ठीक है, ये फादर इन लॉ है ना, प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में रिलेशन है. अब ये सन है और ये मदर है. अब जी का रिलेशन पूछा है एफ से. अब जी का पूछा है तो जी इज व्हाट? जी इज मदर. अगर एफ का पूछा होता तो एफ वुड बी सन. ठीक है, तो सेकंड वुड बी मदर. इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? यस. No, sir. ओके, ठीक है. अदर टॉपिक इज वेन डायग्राम. बहुत इजी है, बहुत इजी है. इसमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है. जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो इन वेन डायग्राम द क्वेश्चंस आर लाइक यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल 1, द फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर अगर फ्रूट और बनाना, you have given two variable, one is fruit and banana, so can you establish a relation between them? ठीक है, so fruit is a bigger domain, और fruit के अंदर में banana आता है. Banana is one of the fruit, so I've just drawn this bigger circle for fruit, and to represent banana within it I'm just written another circle within it. Okay, ठीक है. इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला या सेकंड वाला? First. फर्स्ट वाला, राइट. अगर यहाँ पे बनाना है और बनाने के अंदर फ्रूट इज नॉट अ कैटेगरी. ठीक है, अभी आप ये एक इसको बताओ कौन सा which figure has able to represent the statement correctly. So I think it's A. A. Other than A, anyone? So D could also be the answer. Okay,
So I'm having A and D. Other than these, so A is the answer. How? So food is the bigger category. So Yes. we understand now vegetable and carrot both are food, right? So within food we have a broader category called vegetable, and within that we have um, another category of carrot. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, लेट्स से आई एम पुटिंग ब्रिंजल हेयर, ठीक है? तो आप वो कैसे बनाएंगे उसको? क्या एक और ऐड कर देता है यहाँ पर, राइट? और एक और ऐड कर Yes, देता sir. हूँ मैं यहाँ पे। Yes, sir. Yes, ये sir. दो, ये वेजिटेबल हो गया कैटेगरी, एंड देन वन Vegetable. सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग कैरेट एंड अदर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ब्रिंजल, ठीक है? Brinjal. Yes, sir. एंड Yes, बोथ sir. आर विद इन वेजिटेबल कैटेगरी। गुड। अभी इसको बताओ, which one? Sir, A. A. Okay. Sir, Other than, B. okay. Other than B and A and B. Sir, D. Okay. Anyone Sir, C? D. Okay. So I'm getting 2D, 1A, 1B. Sir, D. C. Anybody wants to go with C? Sir, No, D. sir. D. Okay. D, I'm sir, getting D. 3 for D. Okay. Okay. Good. So it says one of the following Venn diagrams, which of the following represent the relation between man, father, and doctor? Okay. So man is the broader category, right? And within man we say father is another another category, small category within it. Okay. Now doctor, it says doctor. So doctor, it could be, I mean, he could be a father, he could be a man. Okay. So it is not that कि सारे जो men हैं they are doctor और सारे father हैं वो doctor, ऐसा नहीं कह सकते. We can say there are doctor, certain doctor are father and certain doctor are men. Okay, so D is correctly best is depicting the relation between men, father and doctor. So D is the correct answer. ठीक है? कोई confusion किसी को? No, No, sir. sir. ठीक है? Okay. So बहुत easy है. बताओ. Which number is representing women, homemakers who are good at crafts? 3. Okay, 3. Other than 3? ओके यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये वुमेन कैटेगरी है. ओके, ये दिस इज अ वुमेन कैटेगरी एंड दिस इज गुड एट क्राफ्ट. दीज आर गुड एट क्राफ्ट एंड दीज आर होम मेकर. अभी हमको क्या बताना है कि वो वुमेन भी होनी चाहिए, शी शुड बी होम मेकर एंड ऑल्सो गुड एट क्राफ्ट. तो जहाँ पे जो ट्राई जंक्शन होगा, ट्राई जंक्शन एज इन कि जहां पर ये तीनों कंडीशंस का कंजक्शन होगा, मिल रहे होंगे, मीटिंग पॉइंट होगा, वहां पर जो नंबर होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन, होम मेकर एंड गुड एट क्राफ्ट. ओके, तो कौन सा ऐसा है जहां पर तीनों मिल रहे हैं? Sir, अगर 3. आप
आप 4 को देखो तो 4 में women है और good at craft है, यहाँ पर होम मेकर नहीं है। आप अगर 2 को देखोगे तो women and again होम मेकर है। ओके 5 को देखोगे तो good at craft है, होम मेकर है। सो 3 इज द नंबर जहां पर women भी है, good at craft भी है और होम मेकर भी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now we are moving to our new topic called the seating arrangement. So basically यहाँ पर क्या आपको समझना है? Okay. यहाँ पर आपको ये समझना है कि जहां पर जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ओनली कंफ्यूजिंग पॉइंट जहां पर आई मीन हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। सो इफ द स्टेटमेंट्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, तो लेट्स से अगर यहाँ लिखा है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड द इमीडिएट राइट टू ए। ओके, नाउ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये किसका फॉलोइंग स्टेटमेंट है? इज इट टॉकिंग अबाउट बी और ई? B. हमारे यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, बी, वी हैव टू सब्जेक्ट्स बी एंड ई। ओके, नाउ देयर इज अनदर फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो किसका फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये? डज दिस बिलोंग्स टू बी और ई? B. ओके, बी। व्हाई बी? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय एंड, और जब भी कोई स्टेटमेंट एंड के बाद या और के बाद आता है तो जो भी स्टेटमेंट दिया होता है फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट पर्सन। तो हु इज द फर्स्ट पर्सन? सो बी इज द फर्स्ट पर्सन। सो इट So सेज one बी। more time, please. So one more मैं time. कह रहा हूँ Starting. कभी भी अगर आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ हो और बीच में और या एंड हो, तो जो स्टेटमेंट एंड के बाद फॉलो होता है, इट इज एक्चुअली द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर अगर बी की बात हो रही है, बी इज द थर्ड टू द लेफ्ट, ओके, एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई एंड इमीडिएट राइट ऑफ ई। सो बी की बात हो रही है कि बी इज लेफ्ट ऑफ ई एंड बी इज ऑल्सो इमीडिएट राइट टू ए। क्लियर? Yes, sir. और व्हेन द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय हु, तो यहाँ पर जो ये हु है ना, इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस सेकंड पर्सन, दिस डी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो गया, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, यहाँ खत्म, फिनिश। नाउ this statement which is followed by who is actually for D. This statement is for D कि D is sits, who sits to the immediate right of C. ठीक है? Yes, sir. ओके, अभी आप ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप अगर लेट्स से these people they are sitting in a row and if they are facing north, तो इनका राइट कहाँ होगा? This would be the right. Yes or no? Yes, sir. This would be right, this would be left. If they are facing north and if they are facing south, तो उनका left right change हो जाएगा. So it would be left and it would be right, isn't it? Yes, sir. Okay. Now if let's say they are sitting around a table, round table, ठीक है, this is a table, तो वहां पर क्या हो जाएगा? This would be right and this would be left. Yes or no? If they are facing towards the center of the table, so let's say I'm sitting here, this is backward and this would be right and this would be left, isn't it? Yes, sir. And if I'm facing outside, I mean outside the table, तो क्या हो जाएगा? This would be left, this would be left. If I'm facing this way, if I'm facing this way, so actually this would become left and this would become right. Clear है? Yes. ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इजी है। ओके, आप पहले पूरे चारों स्टेटमेंट पढ़ लो एंड देन आंसर द क्वेश्चन। And please take just 1 minute, not more than that.
Done. Okay, I'm explaining it. It says Mr. A, Miss B, Mr. C, and Miss D are sitting around a table and discussing their trades. Okay, so I'll draw a table, a round table, ठीक है, and discussing their trade. Obviously, वो facing center of the table करेंगे या outside? Center of the table. Center of the table. Obviously, they would be sitting like this ना, सबका face ऐसे होगा. राइट ठीक है, तो ये राइट होगा, ये इनका लेफ्ट होगा. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या कहता है कि हमें नहीं पता इनका अरेंजमेंट क्या है. वी डोंट नो अबाउट देयर अरेंजमेंट, बट यस वी नो दे आर sitting around a table. There are 4 people, okay, and they have different 4 people in their respective trades. Okay, so it says, the first statement says A sits opposite to the cook. So I'm just, you take as a starting point, any starting point. अगर आपको ये A लेना है या A लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, but let's say I'm considering this as A, and C, and Mr. A sits opposite to the cook, and I don't know about this ये क्या है, but I know इनका profession, which is he's a cook. Is it clear? कोई confusion? यस सर No confusion. Okay, so it says again, it says Miss B sits right to the barber. अभी यहाँ पे confusion हो गई है, हमें नहीं पता कि मिस बी कौन है, वो कहाँ. मिस बी कुड बी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी. सो आई एम जस्ट स्किपिंग द स्टेटमेंट फॉर नाउ. ओके, नाउ कंसिडर द थर्ड स्टेटमेंट. इट सेज द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर. The washerman is on the left of the tailor, and now also I cannot put washerman or tailor. अभी यहाँ पे नहीं conclude कर सकता मैं कहाँ पर होगा. So I'm just again skipping this statement. Okay, now fourth statement says Miss D sits opposite to Mr. C. Okay, so I'm just आप इसको D ले सकते हैं, and this is C. Is it clear? यस सर ठीक है ना, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ऑब्वियसली डी एंड सी दे आर सिटिंग ऑपोजिट. ए एंड बी, ए एंड sit A. Okay, now can you make what is I mean which has the profession as a cook? यहाँ पर क्या बच गया अभी? Because Miss D and C sits opposite to each other. अभी कौन बचा है? Who is left? B. B बचा है. बचा है. तो can we conclude that B has a profession of a cook? Can we conclude it? Yes, sir, Yes, because sir. 4 people are only sitting, no, round the ठीक है, table. I'm going by the statement and drawing as per the statement. ठीक है, तो हम it is there. Miss D sits opposite to C, Mr. C. Okay, so अभी कौन बचा है? A हमको दिया है, तो A किसके opposite बैठेगा? B के. Cook. ठीक है. Okay, अब now go again by the statement. Miss B sits right to the barber. Okay, and Miss B, ये Miss B है, ठीक है, and Miss B sits right to the barber. तो barber कहाँ होना चाहिए? D. B के कैसे? लेफ्ट में. C. अगर B. ये मिस बी है ना, ये राइट में है. ये किस, अब राइट कहाँ पर है? ये है ना राइट, तो ये है ना राइट, Yes, sir. है ना, ये राइट है, क्योंकि दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल. Hmm. So we can again conclude that C is barber. Okay. Clear?
हाँ ठीक है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर. अभी बचा है ये दोनों. अभी इट सेज द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर. अभी आप ये बताओ, ये डी का राइट है और ये डी का लेफ्ट है. ये डी का राइट है एंड ये लेफ्ट है एंड दिस इज राइट. व्हाट इट सेज, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर. ठीक है. सर तो टेलर कौन है? आप किसी को भी बना सकते हैं. अब टेलर या तो डी ओके होगा ओके या ए ओके होगा. ओके हम्म. इजंट इट. हम्म. तो वॉशरमैन कौन होगा? ए टेलर होगा और ए टेलर के लेफ्ट में वॉशरमैन होगा. डी. ओके. Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? कोई डाउट है? जस्ट आस्क मी. No, sir. नो ठीक है. सर फाइन. इट्स बेटर टू करेक्ट इट साइमल्टेनियसली. ठीक है. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Can you answer What this? are the trade of A and B? Tailor and cook. Tailor A and is the cook. tailor and B is the cook. ठीक है. तो B is the correct answer. Is it clear? Yes, sir. Okay. Let's see how many questions are there. Okay. Can you take a screenshot of this and you solve it by yourself? I'm just moving just because of lack of time. Okay, sir. You take a screenshot of this question, solve it, and discuss. I'll make a one group and just share your question and I'll correct if there is any So, mistake. but whatever we are discussing now, Uh-huh. the questions, will you share this? Yes, I These will share. questions I again? have lots of questions, more than 100 of Okay. question. Okay. No, So, which we are discussing now. हाँ, वो उसमें सारे रैंडम Fine. क्वेश्चन हैं. उसमें मॉक टेस्ट भी Okay, है. okay. उसमें ये भी क्वेश्चन Okay. है. देयर कुड बी एक्सक्लूसिव, तो आई कैन नॉट से, बट देयर कुड बी अ रिडंडेंसी. जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इट मे बी देयर फॉर. ठीक है, हो सकता है इट मे बी रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. बाकी आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है. तो यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और उसके बाद वी आर मूविंग टू अनदर. ओके. नाउ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये कैसे आती हैं यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें? आई एम जस्ट, देयर इज एज सच नो, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. आई जस्ट गो बाय द स्टेटमेंट और उनको कैसे इक्वेशन बनाना है. ठीक है. अगर इक्वेशन बन गई है एज पर द इक्वेशन तो इट इज सॉल्व, ऑलमोस्ट सॉल्व. ठीक है. फिर तो बेसिक मैथ्स है. सो इट सेज A इज ट्वाइस ओल्ड एज B. सो A यहाँ पर क्या है? A इज ट्वाइस. अच्छा, अगर अब मैं ट्वाइस करूंगा B को, जब ट्वाइस करूंगा B को तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू A. करेक्ट है ये? Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सो 5 years ago मींस A माइनस 5. इसमें से जो अभी A का प्रेजेंट एज है ना, तो इसको ऐसे कुछ करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट A एंड B अब हमने ले अभी दिस इज अ प्रेजेंट एज. ठीक है. अभी जो है A इज ट्वाइस एज ऑफ B. ठीक है. नाउ 5 years ago, नाउ अगेन इट रिप्रेजेंटिंग A की प्रेजेंट एज में से 5 साल पहले वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 years. ठीक है. 5 years ago A was 3 times as old as B. So 5 years ago A was, so I'm just again subtracting. B में से भी 5 subtract करूंगा 5 years. तो उस टाइम पे अगर इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना था तो इट वाज थ्राइस एज एज ऑफ B का जो इफ 3 times of B was A, 5 years back ago. ठीक है. ये कंफ्यूजिंग है ये क्लियर है ये? हेलो.
क्लियर है सर? क्लियर है ना? देखो क्या किया अभी Yes, sir. यहाँ पर, अभी ये प्रेजेंट एज है, तो वी जस्ट गो बाय दिस स्टेटमेंट, ए जो है दैट इज, जब ट्वाइस ऑफ कर देंगे बी का, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए। बट 5 years अगो, तो 5 years अगो हमको ए में से भी 5 साल सब्ट्रैक्ट करने हैं एंड बी में से भी 5 years सब्ट्रैक्ट करने हैं, एंड देन टू एट दैट टाइम टू मेक दिस इक्विवेलेंट वी हैव टू मेक थ्राइस ऑफ बी। बी की एज का जो थ्राइस था उस टाइम वो एक ही एज थी, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Now Yes, sir. we will solve this equation. कैसे solve करेंगे? We'll just solve this first equation. Second equation, a minus 5 is equal to, ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, this is 3b minus 15. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now we'll take this part and वेरिएबल एक साइड कर देंगे और कोएफिशिएंट एक साइड. So a minus 3b is equal to minus 15 plus 5. क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, और ये आ जाएगा, वी हैव -10. ओके, सो वी गेट दिस a minus 3b is equal to -10. Okay, now you put the value of a here. You put the value of a here. So a is 2b. I'm just putting a की जगह instead of t, instead of a I'm putting 2b minus 3b is equal to -10. Okay, so this is minus b. If you subtract 2b से -3b subtract करेंगे, you get minus b and -10. So b is what? 10. 10. 10. अभी आप यहाँ से a निकाल सकते हैं. Again you will put Yes, sir. this into this equation. So a is twice of b. 20. Twice of b बोले तो 20. 20 आ गया, ठीक है? So present age कितना आ गया? 20. प्रेजेंट एज हो गया b, a का हो गया 20 years और b हो गया 10 years. Yes, sir. ठीक है, और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे वेरीफाई? a is twice as old as b, तो ये twice है, Hmm. twice Yes, है sir. ना? ठीक है. एंड Yes, 5 years ago अगर इसमें से 5 years कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा? 15. और ये 15. कितना हो जाएगा? 5. 5. तो ये उस टाइम पे ये इसकी एज का थ्राइस था, इजंट इट? Thrice. Yes, sir. तो ये ठीक है, वेरीफाई हो गया. Yes, ठीक है, sir. सो वी Yes, गॉट द प्रेजेंट एज एज 20 and 10. क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सर जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस की बात की है, अगर आफ्टर इयर्स अगर पूछता है तो वहां पर हम, अगर इसी क्वेश्चन में होता आफ्टर 5 years, तो 5 साल Then- ऐड कर देते, एड. ओके, ए प्लस 5. तब ऐसे कर देते. ठीक है, ओके. ओके सर. ठीक है, ओके. ओके. क्लियर सर. ओके. आप इसको सॉल्व करेंगे. अगेन जस्ट टेक नॉट मोर देन 1 minute. हो गया? टाइम्स अप. ठीक है, किसी का आंसर आया? नो सर. ठीक है, आई एम डूइंग इट. ठीक है, यहाँ लिखा है मोहन इज 24 years old than his son.
ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग लेट मोहन की एज इज m और उसके सन की एज कितनी आ जाएगी, लेट्स से s। ठीक है, मोहन की जो एज है वो 24 years ओल्डर देन हिज सन, तो उसकी सन की जो भी एज होगी उसमें जब 24 ऐड कर देंगे तो दैट इज द एज ऑफ मोहन। सर 46। करेक्ट है, 46 आ रहा है आपका, 46 आ रहा है। यस सर। ओके ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। एज ऑफ मोहन as m and son ki age is 7. Now in 2 years as in future in 2 years his age will be as twice of his son's age. Okay, now Mohan age 2 years later and son age 2 years later. Okay, so his age will be twice of his son's age. So to balance this, इसका जो सन का एज हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा मोहन की एज। एनी कंफ्यूजन सेकंड स्टेटमेंट? नो सर। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज m+2 इज इक्वल टू 2s+4। ठीक है, अभी इसमें क्या वेरिएबल एक साइड ले आएंगे आप, सो m-2s इज इक्वल टू 4-2, so m-2s is equal to 2. Now you can put the value of m into this equation, or I'll just name it equation 3. m की जो वैल्यू है s+24 है, so I'm just, instead of writing m, I'm just writing s+24 minus 2s is equal to 2. Okay, सॉल्व इट। कितना आ रहा है ये आ जाएगा -s=-22। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ रही है, s is 22। ठीक है, नाउ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ s इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, सो यू विल गेट द एज ऑफ m। Okay, so what is the age now? So 46 is the age, right? 46 is the right answer. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हेलो? यस सर। नो सर, क्लियर। ठीक है, okay, again take just a screenshot of this and try to solve it by yourself. ठीक है, इसमें क्या करना है, जस्ट मेंशन इट, एट प्रेजेंट अ मदर इज 3 times ओल्डर देन हर सन। ठीक है, तो जो मदर का एज आ जाएगा वो लेट assume द एज ऑफ मदर एज m एंड सन का एज है s। ओके, तो मदर्स एज प्रेजेंट 3 times of age of her son. ठीक, after 5 years again m+5 and s+5, the sum of their ages will be, तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, the sum आ जाएगा, sum of their ages would be 70. So the age of mother after 10 years will be, now that they are asking what will be the age of mother after 10 years. So what you will do, you will just put the value of m as 3s. So you'll write this 3s, put the value of m here, 3s plus 5 plus s plus 5 is equal to 70. Okay, तो अभी कितना हो गया ये, 4s, 3s और 1s, 4s and ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 60s. So I'm just writing here, so this will be 4s plus 10 is equal to 70. So 4s is equal to 60, s is equal to 60 by 4, which is 4 and 5, 1 and 5, 15. So सन की एज कितनी आ गई,
ओके 15 years. एंड मदर की एज पूछी है, तो यू नीड टू फाइंड द एज ऑफ मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, विच इज 3 times ऑफ हर एज ऑफ हर सन. सो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 45, isn't it? 45. यस सर, अभी 45. लेकिन 10 साल बाद बोला है, क्वेश्चन में पूछा है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी. कितना हो गया? 55 years. 55 plus 10. Okay, sir. Clear Yes, है? sir. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. Okay, now we are moving to another topic called the ratio, proportion, and percentage. Anybody has any idea about what is ratio and what is proportion? So I'm telling you, the ratio is nothing but the comparison of two quantities. When we are comparing two quantities, it is called the ratio. Okay, and जब भी हम दो रेशो को इक्वालिटी में पुट करते हैं, whenever we put two ratios in equality in as an equation, so that is called the proportion. Okay, so basically, for example, if you need to find the ratio, let's say in a class there are 12 girls and 18 boys. Okay, 12 girls and 18 boys. Now if I ask you what is the ratio of girls to boys, what is the ratio of girls to boys? So how many girls are there? 12. And how many boys? 18. Okay, and if you need to otherwise simplify this ratio, this will become, so actually 2:3. This is the ratio of girls to boys. अगर ये boys to girls का ratio होता तो, so this would become 3:2. Is it clear? This is the ratio. We are comparing the two quantities. Here the number of girls to boys or boys to girls. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now what is proportion? In a proportion, we are just putting equivalent. Okay. So you understand 12 by 18 था, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, इज इट इक्विवेलेंट टू 2:3? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. वी सिंप्लीफाइड इट, नो? सो एक्चुअली ये जो रेशो है और ये जो रेशो है, दे आर इक्विवेलेंट. और जब कोई दो रेशोज इक्वल होते हैं तो वी कॉल इट प्रपोर्शन. Okay. Okay. अगर एक और, अगर if I need to make one more, let's say I'm just let's say if I need to put one more, let's say is it 2:3, and can I write this? Is it a proportion or not? Yes or no? या ये proportion में है? क्या ये दोनों रेशो इक्वल हैं या नहीं? Are they equal or not? Yes, sir. Yes, Equal they है. are equal. Yes, sir. 7:2. 2 and 3. 23. 7 So they are equal ratio. 7 are 21. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन. ठीक है, अ प्रोपोर्शन Yes, इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, जहां पर दो रेशियोज इक्वल होते हैं. ठीक है, एंड प्रोपोर्शन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, जहां पर दो रेशियो इक्वलिटी में होते हैं. ठीक है, सो यूजुअली हम कैसे लिखते हैं इसको? 2:3, दिस इज वन रेशियो. Proportion to equal to 14:21. That's how we write it, proportion. Is it clear? yes, sir. ठीक है. For example, अगर let's say you have given this 2:3 equivalent to 7, and you need to find this one. Can you find it? Can you find it? तो आप क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे.
सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 21, यही then होगा। x equals to, yes sir, so ठीक then है, it will become x equals to 21/2. ठीक है, 21/2, ठीक है। क्लियर? Yes sir. Okay, now we are moving to percentage. We are moving to new topic. Yes. सर एक प्रीवियस टॉपिक से एक एग्जांपल जस्ट आया है टू कंफर्म। जैसे अगर दिया हो कि 11/55 इक्वल्स टू 1/5, तो मतलब दे आर प्रोपोर्शनेट, राइट? हाँ, ये प्रोपोर्शनेट है, ठीक है है ना। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, लेट्स से कि आपको, लेट्स से कोई एक एरिया, स्कूल का एरिया है, व्हिच इज इनटू, उसका जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ दिस प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल, लेट्स से दिस इज a 50 मीटर, ठीक है, and the length of this is of 100 meter. Okay, now if you need to, if you have been asked to minimize this into a model, and it should be proportionate, ठीक है, और आपको ये मॉडल एक प्रोपोर्शनेट और मॉडल बनाना है, छोटा, मिनिमाइज। सो कैन वी मेक अ मॉडल ऑफ दिस, लेट्स से 20 centimeter and 10 centimeter? Can we make? Can I make this model of 20 centimeter? Is it proportionate to this? Yes sir. प्रोपोर्शनेट हुआ ना? कैसे प्रोपोर्शनेट हुआ? Yes, sir. कितना रेशो आ रहा है? 2/1. 2:1, yes sir, 2/1, yes और sir. यहाँ पे भी 2/1. So that's what we call it a proportionate, ठीक है, Oh, yes. है ना। किसी प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन रखना, आप उसको बढ़ा दो, घटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट इट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट, ठीक है। Yes, sir. अगर लेट्स से, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा 10th में, तो जैसे हम वी यूज टू मेक दिस केमिकल एडिंग 2 different chemicals or 2 different mixture, let's say water and the alcohol, into 2:3 ratio, right? So we had to, if we had to make this in a bigger quantity, तो हम liquid कितना भी ले सकते हैं मिक्सचर, but it has to be in a particular ratio 2:3. ओके, जैसे मोलर क्वांटिटी होता है, मोल्स कितना ऐड करना है, तो इट हैज टू बी इन प्रोपोर्शनेट। ओके, हैविंग द सिमिलर रेशियो ऑफ 2 and 3 and more than 2 or more quantities, ठीक है, 2 or more quantities, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ these are some questions, I guess these are previous year's questions. It says the price of LPG cylinder is 400 earlier, ठीक है, now its price has increased to 800. Find the increase in percentage terms. ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट, सेंट मींस 100, ओके। सो we are just taking 100 as a reference point and that is called percentage. अगर किसी के, let's say if somebody is getting 50 marks out of 200, somebody is getting 50 marks out of 200, but we want these marks as a percentage. We want out of 100, not 200. I don't want 200, ठीक है। ये 700 भी हो सकता है, 800 होता है, I don't care. I just want this with reference to 100. 100 के reference में कितना मिला है, okay? So if I need to make it to 100, so I'll just make percentage of it. So this will become 25%. Okay. अगर कहीं पे 47% दिया हुआ है, तो how we will write it? We'll write this 47 divided by 100. This is 47%. Is it clear? Yes, sir. ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई सिलेंडर का अर्लियर प्राइस वाज 400, नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज टू 800,
राइट? तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज टर्म? कितना इंक्रीज हुआ है? ओके, सो आई एम टेलिंग यू, कभी भी चेंज होता है, प्राइस में चेंज हुआ है, तो जो लेटर प्राइस होता है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? अगर ये डिक्रीज भी हो जाता या इंक्रीज भी हो जाता, अभी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। हाँ, तो दिस इज न्यू प्राइस माइनस अर्लियर प्राइस, or simply I'll just write the difference, either this one or this one. This is nothing but the difference. Okay, so I'll just divide this one by the, अब किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं हम? What is the percentage change of with reference to what, which price? The earlier price or new price? New price. Earlier price with reference to earlier price. ठीक Yes. है, with reference to Okay, earlier okay, sir. price, and it is in percent. अब बिल्कुल परसेंटेज टर्म में निकालना है, तो we'll just multiply it by 100. तो अभी आप बताओ कि कितना डिफरेंस आया है? What is the difference in earlier price and new price? What is the difference? 400. 400 divided by what was the earlier price? 400. 400 multiply 100. तो 100. कितना आया है? 100. So basically that what is the percentage change? 100%, 100% change हो गया, मतलब price has been updated 100%. Yes, sir. Clear है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. अभी ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ये बिल्कुल सिमिलरली चलेगा ये. आप would you like to try this? Yes, sir. Take 30 seconds. Sir, unmute your mic, sir. Okay, thank you. So it's saying in an ongoing sale at a mall, 50% plus 30% discount is offered. So what will be the new discount? Okay, let's say you go to a shop, okay, and there are shoes, and there is return 50 plus 30% discount. So what will be the net discount? अगर उसका, let's say the price is 1000, let's say 10,000. Okay, and if they offer 50 plus 30% discount, 50 and then 30%, so what will be the effective price? Or to say, what will be the new discount? Is it 80%? Yes, sir. No, it Yes. is not 80%. It is not 80%. Okay, just let the price is equal to 100 rupees. Okay,
let the price 100 rupees. अभी if I'll अब इसमें से 50% डिस्काउंट करो इसमें, what will be the 50% of this? 50% of 100. 50. 50, right? Oh, sorry, 50. So after 50% discount, I'm the price is 50 rupees. Okay. Now again they are offering me 30% more. 30%. Okay. Now I have to find I mean they are offering me 30% discount. Okay. So basically, वो कितना how it is it is costing me. So I'll just subtract 30%. I'll just subtract 30%. 15. 15. So I'm just subtracting. They're offering me discount 15 rupees, right? Yes. So effectively, net effect कितना होगा? Actual price would be 35 rupees. 35 rupees or 35%. ठीक है? What will the new discount? So new discount कितना होगा? Actually, it is 65%. सर समझ नहीं आया. नहीं समझ आया. अच्छा. Okay. अभी let's say कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है let's say it is 100 rupees. Is it clear? ठीक है, 100 rupees है. And because it is written as, ऐसा नहीं है कि this is not 80, this is not 80%. Okay, it is 50. They are offering me 50%. पहला डिस्काउंट दे दिया और उस डिस्काउंट पे जो भी प्राइस आया उस पे फिर 30% दिया है. So they are asking what will be the effective discount, net discount. So net discount will not be 80%. एक बार करके देखते हैं. We'll just do it. So let the price of article be 100. Okay. Now 50% discount करो इसका, कितना आएगा? What will be the 50%? 50%. 50. Okay. So the effective price will be, after first discount, the price will be 50. 50. Okay. Again they are offering me 30%. अभी 50 में 30% और डिस्काउंट को लेस करो. 30%. So what will be the 30% of 50? 15. 15. So actually the new price after second discount will be 35 rupees. Yes, sir. So अभी आपको बताना है what will be the new discount. What will be the new discount? So how would you do that? अभी आपका earlier price कितना था? 100 minus 35 अभी ये आया. तो आपका डिफरेंस कितना है? What is the difference? What is the difference? 65. 65. तो एक्चुअली आपका जो 65 ये 65% है. Okay. ठीक है. तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आया? 65%. Apparently it seems to be 80%. Actually many जो marketing tactics होती हैं, so they to allure people, तो they write their discount in such a way, हमको तो लगेगा ये 80% है, right? But it is not actually 80%. It is 65%. Okay. Okay. Yes, sir. So what will be the new discount? The new discount will be 65%. 65%. It is not 80%. Have you got it or कोई confusion है? I'll just आपको एक formula बताऊंगा, ठीक है? ये तो I deliberately ऐसा explain किया है. Just you write this formula or you will able to solve such questions. ठीक है? Okay. Moving to another topic, speed, distance, and time. I hope you are aware with this. What is the relation between these three? सर हाँ जी. और एग्जाम में बड़ा घुमा कर आते हैं क्वेश्चन, इतने इसके इजी इस डिस्काउंट टाइप के नहीं आते.
हाँ इतने इजी नहीं आते हैं नहीं ऐसे। नहीं नहीं, उसका जो अभी आएंगे ना एग्जाम, I'll do one by one. अभी ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ओके समझाने सर। के लिए है, अदरवाइज हम उसके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ओके है। सर। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? सो एक्चुअली डिस्टेंस, जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ओके। And likewise, you can say the speed is distance by time, or time is equal to distance by speed. ठीक है, this is the relation between these three. Okay, अगर कहीं पर if you have given the units in kilometer per hour and other unit as meter per second, it is better to convert into the same unit. Better to convert kilometer per hour to meter per second or vice versa. To say कि आपको unit should be the same. Okay, then only you can proceed with your equation or mathematical operation. Okay, first you have to convert, you have to make unit same. Okay, to convert kilometer per hour into meter per second. So basically अगर आपको 2 किलोमीटर per hour दिया हुआ है, and if you need to convert it into the meter per second, so how will you do that? So 2 kilometer is how many meters? 1000, 2000, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस सेकंड? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 hour? 3600, ओके। इज इट? सो विल जस्ट cancel is 2, 5 and 18. So we'll get 2 multiply 5 by 18, ठीक है। तो आपको एक सिंपली क्या करना है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्यों करना है? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, राइट? Okay, or if there are two speeds given to you, let's say from point A to point B, a person go from point A to point B with a speed of 60 kilometer per hour, and he returns from B to his home, back home A, with a speed of 40 kilometer per hour. So what would be his average speed? आप बता सकते हैं? What would be the average speed? उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड से 50, राइट? तो एक्चुअली 50 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, आप क्या करेंगे, 2, आपका जो फर्स्ट स्पीड है, लेट्स से द फर्स्ट स्पीड इज x which is 60, multiply the second speed which is 40 while coming back, I'm taking it as y, and then x plus y. अगर आप इसको सॉल्व करोगे you will get average speed, 48। ठीक है। So 2 multiply 40 first speed, second speed, first speed, and 40 plus 60. So you get this as 2 multiply 4, 0 multiply 60, and this is 100. Cancel, cancel, cancel. So 48 kilometer per hour would be the average speed. ठीक है? Is it clear? Is it clear? यस सर। और अगर आपको 3 स्पीड दिए होंगी, what if you have to go from this, this and this, let's say A, B, C and D. अगर आपको स्पीड दिया होगा, let's say this is 20 किलोमीटर पर आवर, 40 kilometer per hour, and C to D he covers in 60 kilometer per hour. What would be the average speed?
हाउ वुड यू सॉल्व इट? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली इसका भी फॉर्मूला है, बट व्हाट इज द लॉजिक, आई विल जस्ट टेल यू कैसे करेंगे इसको. लेट टोटल डिस्टेंस be x. Okay, now d is equal to s multiplied t. Okay, ठीक है. तो आप क्या करेंगे अगर आपको टाइम निकालना हो? Okay, so I'll just do time is equal to d by speed, distance by the speed. So first distance कितना हुआ? What would be the first distance? ये जो पहला 1/3 है, टोटल डिस्टेंस का जो 1/3 है वो 20 किलोमीटर 20 पर किलोमीटर। अगला जो सेकंड जो 1/3 है, second 1/3 and the third 1/3. Okay, so basically this would be the x by 3 total distance divided by first speed 20. Yes or no? यस सर, 1/3 लिया ना सर हमने। हाँ 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 ठीक है. हाँ, प्लस हम्म, x by 3, सॉरी x by 3 कितना आया सेकेंड स्पीड? 40 किलोमीटर। 40 प्लस कितना हुआ? x by 3 हाँ, by 60। 60. ओके, नाउ you'll solve it. तो आप ये देखेंगे जब सॉल्व करते हैं तो लेट्स से a b और c d, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं. a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, ऐसा हो जाता है, राइट? यस सर। ऑपरेशन सर मैथमेटिकल सिंपल ऑपरेशन. सर नीचे जो इक्वेशन डाला है वो 3 है, बट ए बी सी डी 4 है। कहां पर ABCD? नहीं ABCD एज इन A to B, B to C and C अच्छा, to D. ओके, They are points. So हाँ ठीक है, first, third, ओके। second 1/3 and third 1/3. Is it clear? यस सर। Okay. Now to solve this, if we take this, so this will become x by 60 plus x by 120 and plus x by 180. Okay, you will solve this. कितना आएगा ये? आप एलसीएम सर आप लेंगे? कह रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, x को ऊपर रख के 3 को नीचे लाके मल्टीप्लाई करना है। नहीं एक्चुअली दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन ना, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. सो एक्चुअली दिस इज x by 3 20 by 1, isn't it? तो कितना आया? x by 60. Yes or no? Yes or no? यस सर। Yes, Is it getting confusing or I should तो explain? तो 60 कैसे आया? 60 कैसे आया? आप 3 तो इसको मैं वही तो नहीं, बोल रही हूँ, इंटू किया ना आपने, 3 into 20 किया ना। हाँ सिंप्लीफाई किया हाँ ना इसको. वही, हाँ वही तो। ठीक है. हाँ अब ठीक है सर। आप हाँ if you'll take the LCM of it, कितना आएगा? I'm just erasing it. I'll take the last equation, x by 60, x by 120 x plus by x by 180। 180, and it was the time, right? And total distance was x. Okay, so by taking LCM, this distance equal to speed and time. So we need to find the distance by time is equal to speed.
Okay, so for the final average speed we need the time. ठीक है, तो टाइम यहाँ से कैसे निकालेंगे? What will be the LCM? I hope clear है LCM क्या होता है? 60, 20 and 80 का LCM कितना होगा? 240. कोई is it getting confusing? No, sir. ठीक है, तो if you take the LCM of 60, 120 and 180 would be 240. Okay. Now we will, हम क्या करते हैं LCM के लिए, we'll just divide this one from this one. तो 60 अगर हम डिवाइड करेंगे 240 को 60 से तो कितना आएगा? 4. Okay, so we'll write 4x plus 2x plus Sir, I 240 think नहीं है. okay 240 नहीं होगा. Okay, sorry Yes, sir. 240 नहीं होगा. It is 360. ठीक है, ये 360 होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x. ठीक है, now it will become 6, 3, 9 and plus 2, 11x 11x 360. Okay, so this is actual time. अभी क्या करेंगे, हमको एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, तो एवरेज टू गेट द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना था? x टोटल टाइम कितना था? 11x upon 360. अभी ये 3 अपॉन आया तो कैन आई राइट दिस हियर? Yes, sir. So x से x cancel, so the total average speed would be 360 divided by 11 is the answer. ठीक है, Yes, sir. तो सर इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे? पॉइंट्स कर में सकते हैं, आ कर जाइए। सकते हैं. नहीं बिल्कुल कर सकते हैं. अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप फ्रैक्शन में रखो. ये और वाला हाँ हाँ, हाँ अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कौन सा इसमें दिया है. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. एंड आप यहीं से इसको जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, आप सिंपली हमने इसी मेथड से वी हैव डिराइव दिस फॉर्मूला आल्सो. ठीक है, आप अगर 2 का आया, इसको आप इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अभी ये इसका ये एग्जांपल है, एक इजी है. क्या होगा आंसर इसका? 80 kilometers in 5 hours. स्पीड कितना होगा? आप डिवाइड कर देंगे. 80 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय 16. 5. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. नो, Yes, sir. कितना आ गया? Distance is the 80 and 16 kilometer per. ठीक है, टेक 30 सेकेंड. If Ananya travels 20 kilometer in 2 hours, then how much distance will be covered in 5 hours? Ananya is traveling 16 kilometer in 2 hours. So speed कितना होगा? Speed is equal to distance by time. So what is the distance? 16. 8 और ये कितना हुआ? 2. स्पीड 2 कितना है? 8 8 किलोमीटर 8 per पर hour. आवर. ठीक है, then So how into much 5, distance 40. will be covered in 5 hours? So क्या करेंगे हम? 8 into 5 40 sir. 40 what? 40 kilometers. 40 किलोमीटर्स. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? No, अभी sir. आपने हार्ड वाला कर लिया है तो इजी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No sir. No, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन. just let me check. Huh? So we will end our class here. ठीक है, हम अपनी क्लास Yes, आज sir, यहीं एंड please. करेंगे. बहुत सर के ऊपर जा रहा है सर. सॉरी फॉर दैट. हम आज यहीं एंड करेंगे.
Yes, Actually, sir. दो टॉपिक थे छोटे, so we'll try to cover it in tomorrow's class. Okay. Yes, sir. हाँ. Sir, Okay. will you cover all the topics like we slowly in the next classes? ओके ओके, श्योर श्योर श्योर. अभी आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना, तो आप यू कैन जस्ट पिंग मी, ठीक है, ग्रुप में या कहीं भी, आप कहीं पे भी कोई I'm just asking ki like how will you teach in the next classes, like topic wise, simply like small topics every time ऐसे या फिर कैसे? मतलब आई डिडंट गेट यू, मतलब I mean जैसे syllogism पढ़ना है, हाँ so जी. will you just rapidly cover it up or like you will नहीं explain नहीं, सी everything? इफ इज इट गेटिंग आई मीन थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आई जस्ट मेक श्योर कि आई जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली आई एंश्योर कि कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे आपके पास, ठीक है. If it is getting too fast from my end, I'll try to cover it slowly so that everybody is get comfortable and get the conceptual clarity. ठीक ठीक है. So don't worry about that. Don't worry about that. हम will do questions जितने भी हमने अभी तक concept पढ़े हैं. We'll just use all these concept into our practical applications. We'll use solve questions together. ठीक है. So don't Yes, worry sir. about that. उसमें कोई आप वो confusion मत रखो, ठीक है. Even if takes more days to cover, तो will cover, ठीक है. So it don't worry about it. If it is not exactly like we have mentioned, no, try to cover it within 20 days. Even अगर किसी को problem हो रहा है, तो we may extend it, because the core part is to let everybody get these concepts and इतना कैपेबल हो जाए कि दे कैन डू सच क्वेश्चंस, एड्रेस सच क्वेश्चंस, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. सर इसमें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन फॉर्मूला डालेंगे. ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना. इट हाँ. टुक्स 5 hours in traveling. Either you can do 2xy हाँ. x plus y, or you can simply take a longer route. वही वाला कि let total distance be x, ठीक है. और अगर आपको टोटल टाइम निकालना है, तो हाफ x by 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस x by 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 2. ओके, नाउ स्पीड 1 is given 65, sorry 50, and speed 2 is 65. 65. Okay, now you'll get the time, and उसके बाद आप क्या करेंगे. Now that how you can do it, or simply you put x or y first speed and second speed, ठीक है. यस सर. 2xy प्लस अपॉन x प्लस y से किए सर अगर, तो 2xy. The time is also given na 5 hours. हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, टाइम दिया हुआ है. We find out only average speed and the total distance between A and B. Okay. क्योंकि ये इसलिए दिया हुआ है ना, क्योंकि 5 hours दिया हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालोगे. Yes sir. देन यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. उसके लिए आपको ये दिया हुआ है. Okay, okay sir. देयर आर 2 क्वेश्चन. Yes sir. ठीक है. ओके, Yes sir. सो Got it. So today we'll end our class here, ठीक है. So we are left with 2 or 3 small topic. We'll cover it tomorrow's class, ठीक है. अभी तक so far anybody having any doubt into any concept? सर रिवीजन पे sir. समझ में आएगा सर. Sir, अभी